My name is Giselle Gonzalez, and this documentary project is on the film A Girl in the River, The Price of Forgiveness. This powerful yet heart-wrenching short documentary provides plenty of complex material for analysis through multiple intercultural communication frameworks. This film centers on Sabah, a young Pakistani woman who survives an honor-killing attempt executed by her father and uncle. Through this tragic event, she must navigate justice, societal expectations, and family reconciliation. The purpose of this analysis is to understand and interpret meanings and significance of cultural elements in Gujranwala, Pakistan, examine cultural practices and beliefs and how they impact different members of a society, as well as gain societal insights on Pakistan in order to further comprehend diverse perspectives. ये वो जगह है जहाँ पे सबा कैसर को उसके वालिद और चचा वगैरह ने उसको ज़ख्मी करके यहाँ पे नहर में फेंक दिया था। यहाँ पे चूँकि नहर इतनी ज़्यादा करीब की जो है, किनारा इतना ज़्यादा गहरा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बड़े दिलगुर्दे का काम है। और रात के वक्त 11 साढ़े 11 बजे तो यहाँ बिल्कुल सुनसान होता है। तो यहाँ पे वो उसने थोड़ा सा किनारे साथ जो दरख्त हैं उसका उसने सहारा लिया और फिर वो यहाँ से निकल के, तो उन्होंने चूँकि जुर्म किया था वो जल्दी जल्दी छोड़ के चले गए, तो अल्लाह ने उसको बचा लिया। इसके बाद वो यहाँ से निकल के साथ ही जो पेट्रोल पंप है, लेकिन फिर भी उस लड़की की बड़ी हिम्मत है, जैसे उसने मतलब अपने रेस्क्यू किया, अपने होशोवास पे कायम रखा। हालांकि वो ज़ख्मी भी थी, हाथ भी ज़ख्मी था और उसकी जो चीख है उस पर भी उसको लगा हुआ था फायर। तो ये बड़ी हिम्मत की बात है। मेरी मंगनी को हो गया 4 साल, ठीक है, मंगनी हो गया 4 साल, लेकिन शादी करने लगे थे अभी बहुत अच्छा रहते थे, लेकिन फ़ोन के ऊपर बात भी करते थे, लेकिन मिलते भी थे, लेकिन बहुत अच्छे थे। जब गुस्से में बात करते लेकिन बर्दाश्त करते थे, जब कोई भी कहना, जो काम कहना वो भी मानते थे। जब लेकिन चाचू कहता नहीं उत्थे नहीं करनी है, ਅਸੀਂ अम्मी होर कहते ने क्यों, अबू कहता क्यों, वो इंज दे लड़के, वो फलाने, वो टींगे, वो गरीब ने, वो इंज फलाने से। अबू फिर कहता अच्छा फिर 2-3 दिनों पता लग जाएगा तेनू कौन खड़ता है, पता लग जाएगा। मैनू कहता ही भाई मैं अपने साले यार करना है। मैं फिर अपने ससुराल ने फ़ोन किया, कैसा ने फ़ोन किया, इन मैं क्या इंज इंज कहते पे ने, आंदा तू आ जा असी निकाह कर लें। हाँ जी, सुबह मैं 5 बजे गई थी, ठीक है, मैंने फ़ोन किया कैसर को, वो सुबह आया 5 बजे, मैं उसके साथ चले गई। लेकिन फिर कोर्ट मैजिक वाली बाईपास नहीं है कचहरी अदालत है, वो गए, उत्थे निकाह किया। हाँ जी, अपनी शादी के बाद 1 दिन भी नहीं रही है अपने शोहर के साथ। बस दिन 1 घंटा 2 घंटे बस इंज बैठ के गल्लां कीतियां ने, सारे बैठे हुए सन, इंज बस गल्लां कीतियां ने, नहीं ਉਹਦੇ ਨਾਲ गई किधरे ना गई। मैं 1 भी दिन भी नहीं रही, उस रात को ही ले गई थी। तुसी साड़ी इज्जत रखो, सारे नाल टोरो, जुम्मे वाले दिन तुसी आन के लड़की नूं लै जाया जी। उन्हें इनका चलो ठीक है, कुरान खोलिया, इन्होंने ऊपर हाथ रखा, कुरान दे ते 2 जाना के बाद उत्ते हाथ रखा, ठीक है, असीं लड़की नूं कुछ नहीं कहते हैं। इतों फिर कहता है कि नानका मेरे को लै गए सानूं, ट्यूटा करा के, ट्यूटा चाहता सी। चलो ठीक, मेरे दिल च मैं कुरान एडा वड्डा चुकिया है कि मेरे दिल च कोई गिला शिकवा नहीं है। गल दे विच थोड़ा सा लाया, नाल ही उन्हें गड्डी खिलारी है, गड्डी खिलार के चाचू मेरे पहले चपेड़ा मारते रहे, पहले मैंने थल्ले मारते रहे, मैं माफ थे ये इसको पहले मुझे पिटाई कर रहे, चपेड़े मारे, मुक्के मारे, लेकिन मैं बर्दाश्त कर रही, बातें कर रही, खुदा का काप रही बहुत ज़्यादा इनके आगे। इन्होंने मेरी बात नहीं मानी, नहीं सुनी है। इन्हें दिमाग के उत्ते इंज नज़दीक रखी, दिमाग के उत्ते रखी है, तो मैं थोड़ा सा इंज किया, बस थोड़ी गर्दन हलाई है थोड़ी सारी थल्लों इंज, संग चाचू ने संग दबाया मेरा, कहता ला मार, तो मैं लेकिन थोड़ी सारी इंज गर्दन दबाई है अपनी, तो लेकिन इधर ना कि इन्होंने इसी मार गई है लाके। फिर उन्होंने त्रोड़े के बोरी च बंद करके मैंने नहर च फेंक दिता। चिरेगी फिर तां नहीं आन लगी, लोगों को पता ना चलेगा। नहर में जब इन्होंने मुझे फेंका था,
लेकिन आस्ता आस्ता मुझे होश आए थे. In this clip, Sabah recounts the events leading up to the attack and the attack itself, illustrating her shock and the beginning of her adaptation to a new reality. Sabah experiences culture shock herself when she faces the justice system, media attention, and the cultural clash between her traditional family's expectations and evolving societal norms. Although she is part of Pakistani culture, her horrifying experience as a victim of an honor killing pushes her to a point where she must adapt emotionally and socially by balancing survival with her own beliefs about justice and personal autonomy. For international viewers, the film itself is filled with cultural shocks. The concept of honor killings can be deeply appalling to many. A non-Pakistani viewer especially may experience discomfort, seek understanding, and confront ethnocentric reactions. नहीं मुझे नहीं पता था मैंने नहीं पता ये काम होने वाला है मैंने पता ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ काम क्यों होने देती मैं तो फिर भी मां सा मैं डांट लेती समझा लेती पर फिर मियां की आंखों में तन पता है ये तो होता है ना इसलिए पर गैरत का मसला कोई औरत नहीं कहती है एक दूसरे के मतलब औरत हलथाई हो जाए ये बच्ची है ये ऐसा काम करेगी इसके पिटाई ना होगी इसकी भी पिटाई होगी ये अच्छे तरीके से मेरे पास रहेगी इन अच्छे तरीके से शादी करूँगी सब कुछ दूँगी तो फिर मेरी भी इज्जत होगी मेरी इज्जत तो कोई नहीं छोड़ के गई सबा मेरी इज्जत नहीं छोड़ कर गई मिट्टी में मिला गई मैं जो जी रही हूँ ना मैंने अल्लाह सुनो ऐस थी ने ये काम किया ना मुझे मौत दे दे बाजी गैरतमंद जवान वास्ते तो बिल्कुल ठीक ही था चलो बच गए ਉਹਦੇ नसीब ने ठीक है इज्जतमंद सी साडा भाई गैरतमंद सी हक लाल दी मजदूरी खुआंदा रहा तो जो भी किसी गैरतमंद जो भी होता है इज्जत के लिए ही सब होता है इज्जत के लिए उसने जो किया ठीक किया था हम मजबूर हो के किया उसके साथ जो कुछ भी किया है उसने हमारी इज्जत रो ली है हम गैरतमंद हैं वो घर से क्यों गई थी हम हक हलाल की मजदूरी करके उनको खिलाता था उसने आराम दिखाया मुझे हम गैरतमंद हैं मुझे ये बर्दाश्त नहीं होता हराम नज़र आए एक मन दूध है उसके एक कतरा फेंक दो पेशाब का वो सारे का सारा तबाह हो जाता है इसने ये किया है सबका सब तबाह कर दिया हक हलाल की मजदूरी मेरी तबाह कर दी मैंने बोला नहीं मैं खुद मारूंगा मेरी बेटियां मैं खुद मारूंगा Here we see the perspectives of Sabah's family regarding the honor killing attempt. They justify their behaviors by blaming their daughter while upholding the value of honor on a pedestal that is much higher than that of how they see their daughter themselves. Their high context beliefs further show why they see their perspective as the only correct one. The expressions of Sabah's family show no remorse. Despite facing the consequences, her father sees nothing wrong with his actions and states he would do whatever it takes to uphold his honor. Pakistan is a high context culture where messages are often indirect and communication relies heavily on shared understandings, nonverbal cues, traditions, and even silence. The family's refusal to speak openly about the attempted murder or to show remorse reflects indirectness and face saving, which is where one tries to preserve one's own reputation. These are key traits of high context cultures. Discussions from the perspective of legal systems and human rights, on the other hand, operate in low context ways, as we see with the authorities involved in this case. They possess clear evidence and open speech, and they strive for accountability measures to be enacted. This creates a dynamic of friction between the traditional cultural logic seen by Pakistani culture
versus modern institutional beliefs. Honor killing under the Pakistani law should be treated as a murder, and the case should be prosecuted in the court of law as any murder case. But what happens is that in most cases, the near relatives who are allowed under law can forgive the accused. So, for example, if father kills his daughter, the rest of the family members forgive him. The killers in honor killing cases are allowed to be acquitted. And that is also one reason why honor killings are rising, because people get to know that if they kill their daughters, their sisters, they may still go scot-free. This is not just Sabha's cause, it's the society's cause. It's a question of public policy, whether in such cases compromise or forgiveness should be allowed to happen or not. But seeking justice is a long-drawn process, and women are at a great social and institutional disadvantage. Women in Pakistani society live as second-rate citizens, or perhaps even worse. मैं तो ये सोचती हूँ ये बाहर ना आए, ये अंदर सारी जिंदगी के अंदर है, इनको पता चले। लेकिन हम भी अभी भी कह रहे हैं इंशाल्लाह केस लड़ेंगे, फिर भी मोहल्ले वाले जो बिम्बर हैं, जो सभी ये मान बड़े बड़े लोग हैं मोहल्ले में रहते हैं, ये सभी तरले मिन्नतां कर रहे हैं ससुराल वालों के सभी। फिर कहते हैं बेटा कोई मोहल्ले में बड़े लोग हैं उनकी माननी पड़ती है, लेकिन बेटा फिर उनको कईयों को मनानी पड़ती है, हम यहाँ ही रहते हैं बसते हैं इस मोहल्ले में, लेकिन फिर भी बाद में बेटा उनकी माननी पड़ती है लोगों की। ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਪਾਈਏ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ It's the male members of the community who play a major role in making the parties reach a compromise, and it almost always works against the interest of the victim of honor crime. ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਛੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਿਸ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬੱਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਤੋਂ ਮਜਰੂਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਭੈਣ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਲ ਪੋਸ਼ ਕੇ ਜਵਾਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮੁਫਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਉਹ ਬਚ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ। ਇੱਜ਼ਤ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਦੋ ਤਰਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਨਾ ਇਹਨੂੰ। In this clip, the clashing of views between legal authorities and family arise. Family discussions emphasize the importance of family honor over individual desires, while legal officials highlight the importance of individual rights, particularly women's rights. Sabah's lawyer addresses inconsistencies relating to how women are treated in Pakistan. Gender inequality is highlighted as male elders are consulted for situations that do not involve them in the first place. Sabah's story is a fight for individual rights in a collectivist society, where family honor overrules personal autonomy. Her decision to survive, speak out, and resist forced pardons and reconciliation challenges the collectivist expectation that a woman's actions should always uphold group honor. Her forgiveness under pressure is not an individual choice, but rather a reflection of collectivist pressure and the prioritization of family and community at significant personal cost. ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਸੁਣਦੇ, ਕਿਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਤੇ ਗਮੀ।
100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਿਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੁਰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਖਰੇ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਹੀ ਕਰੇਗਾ ਕੁਰਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਚਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਹਾਂ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੰਮ ਲੰਬਾ ਹਟੀ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਭਾ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੋਗੇ ਕਿ ਭਈ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਏਗਾ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਸਮਝ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ Here we see Sabah's demeanor change as conversations between her and her in-laws take place. This shift is seen through her nonverbal cues under societal pressures, showcasing indirect communication patterns that are typical of high-context cultures. We see that she has averted eyes, silence, her tone of voice changes, and there's even some physical distance. While she initially wanted to not forgive her father and her uncle, she now subdues to the societal pressure that presents itself. Sabah's body language while speaking about her father shows pain, hesitation, and suppressed emotions. Family members avoid eye contact and speak in casual tones when discussing the crime in their family, signaling an emotional detachment to the honor killing. Nonverbal cues can easily be misunderstood by low-context viewers of other countries who might be accustomed to more open displays of emotion. मेरे ख्याल में ऑनर किलिंग के मतलब को ऐसा इस्लाम में हुक्म नहीं मिलता कि इस्लाम तो ये कहता है कि आप उनमें हकूक़ का ख्याल रखें चाहे वो मर्द हो या औरत हो अल्लाह ने उसको हक दिया है फ्री है तो इस हवाले से मेरे लिए बड़ा फ्री कि एक इतनी सी बात पे इतना बड़ा उसके साथ हो जाना ये तो बहुत ही गैर इस्लामिक सा फेल है फिलहाल जो कुछ भी किया है गैरत में किया इन सब ने जो कुछ भी हुआ है कौन कोई बर्दाश्त करता है किसी की बेटी और घर से इस तरह चले जाए कोई भी नहीं गुजारा करता फिलहाल हम वो थे जो हमें कोई बात नहीं था करता आज वो भी है जो हमसे डरते थे वो भी हमें बात करके साइड से चले जाते हैं हम तो इनके घर में ना हम किधरे में आते जाते थे तो वो भी हमारे सभा की वजह से हम उनके घर में भी नहीं जाते जिनके घर में जाते थे पापा को कहते हैं इनका शायद नमक नहीं था ठीक है ये है वो है In this clip, we see two different perspectives from the same culture. Legal authorities view honor killings as tragic crimes, which deserve to have consequences attached to them, while community and family members view such an act as justifiable. Viewers may react with ethnocentrism, judging the practice of honor killings through their own cultural lens. They may view these actions as barbaric. A culturally relativist view can attempt to understand how such practices have been embedded for so long as cultural norms. This documentary challenges viewers to balance moral critique from a human rights perspective with cultural understanding,
trying to create space for a deeper reflection on how traditions evolve over time. मैंने उसको माफ कर दिया, उसने मुझे माफ कर दिया। ये बात है कि आगे जिंदगी का नया आगाज शुरू कर दिया। फिर कि अभी देखो ना कि ये वाकया किया है कि सब बहन भाई जितने भी हैं वो बोलते हैं कि आप गैरतमंद हैं, आप इज्जतमंद हैं। भाई आप ठीक हैं, जो भी किया है आपने ठीक किया है, बेहतर किया है। अपना जड़ा कि नहीं, हमारे पीछे भी बेटी थी ना, अभी 3-4 रिश्ते आए हैं। बिरादरी ने बोला है अपना जड़ा कि नहीं कि ये बेटी मुझे दो, ये बेटी मुझे दो, ये बेटी मुझे दो, आप अच्छे आदमी हैं, आप गैरतमंद हैं। 7 नस्ल तक और हमारी कोई ऐसी बेटी ऐसा कदम नहीं उठाएंगी इंशाल्लाह। ये मुझे फ़ख्र है अल्लाह के हुक्म से। उनको ये ख़तरा डर होगा कि ये एक बहन ने ऐसा किया है तो उसके साथ ऐसा सलूक हुआ था, हम करेंगी तो हमारे साथ पता नहीं क्या सलूक होगा। जब इतने बड़े ना होते, इतना दबाव ना आता, फिर मैं इनको कब माफ़ करने वाली थी। नहीं थी माफ़, मैंने करना ही नहीं था। मैंने कहा जितनी देर अंदर ना रहे, मैंने माफ़ नहीं था करना। सभी को पता है, लेकिन मैंने लोगों के लिए माफ़ कर दिया, सभी के लिए, घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के, सभी की मान कर मैंने माफ़ कर दिया, लेकिन मैंने दिल से किसी को भी नहीं माफ़ किया अभी। Here we see a further imbalance of power as Sabah and her father share their perspectives on the outcome of the case. Her father focuses on continuing the same practices if necessary in order to control generational outcomes and to maintain having respect in their society. Sabah emphasizes that she would not have forgiven her family if she was not coerced to do so by the male elders. She even was hoping that they would stay imprisoned for their cruel actions. This film is deeply rooted in intercultural conflicts. We see traditional versus modern perspectives, family versus self, and local customs versus international human rights. Different power dynamics play out throughout this documentary through gender, class, and law. We see these as men dominate decision-making and cultural narratives regarding honor. The justice system, although progressive, is constrained by patriarchal power structures. The pressure to forgive comes from the imbalance of power that we see many times. Sabah's choice is influenced by male domination and the fear of social and economic consequences. The documentary, A Girl in the River, is a baffling recount covering Sabah's heart-wrenching story of the gruesome honor-killing acts inflicted upon her, which are unfortunately recurring in cultures like Pakistan's to this day. This documentary examines how global human rights collide with traditional collectivist values in Pakistani culture. It also explores how intercultural communication barriers and overall differences can impact justice, identity, and societal change. Thank you.